Good morning, students. So, now we are going to start a new topic of social studies, chapter 2, our earth, our home. Now, tell me, do you know in which planet we live? क्या आप जानते हैं हम किस planet में रहते हैं? Yes, we live on the planet Earth. Like we all live in a family of different group of members. In the same way, the sun had this family of 8 members. जैसे आप अपनी फैमिली में डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ रहते हैं, ऐसे सन हैज इट्स फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स. एंड हु इज दिस 8 मेंबर्स? ये 8 मेंबर्स कौन हैं? These 8 members are the planets. The sun and its planets together make the solar system. The sun together with the planets and other bodies that revolve around it. All these planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, all these planets revolve around the sun. And Earth is the third planet. Do you know that the name Earth came from the Old English word eartha, which means ground or soil. Earth का name एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड से आया है eartha, which means ground or soil. Now tell me, which is the smallest planet? Yes, Mercury. And which is the largest planet in our solar system? Yes, Jupiter. Now let's learn more about the Earth. Why Earth is different from the other planet? या फिर ये कहें, why life is exist only on Earth planet, not in other planets? या लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ प्लैनेट पे और किसी प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? रीजन, दिस इज बिकॉज इट हैज एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर. एंड द अर्थ इज द होम टू ऑल द लिविंग थिंग्स, human beings, plants and animals. Yes, life is exist only in the Earth planet. Now I will tell you one by one. First, it is surrounded by the layer of air. It is called atmosphere. The atmosphere protects our Earth from the harmful rays of the sun. जो sun की harmful rays आती हैं, ultraviolet rays से हमें protect करता है. Second, about 3/4 of the earth is covered by water and 1/4 of it by land. आप सभी जानते हैं अर्थ सरफेस 70% ओशन से कवर्ड है और वाटर इज ब्लू इन कलर. सो सीइंग फ्रॉम द स्पेस, अगर आप स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ लुक लाइक अ ब्लू बॉल. That's why the reason it is also called the blue planet. Now the third reason, it has the right temperature needed by all the living things to live. Earth एक ऐसा planet है जहाँ पे एक right temperature है, neither too cold nor too hot. That makes the life possible on Earth. Let's recall why life is only exist on the planet Earth. Reason, it is possible only because of the presence of air, water and the right temperature. Now, students, what is the shape of the Earth? Do you know? Yes, round. But do you know that people in the past have no idea about it shapes, and they believe that the earth was flat and has edges. आपको पता है पहले के टाइम पे लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है और उसके एजेस हैं. बट इन 1590 फेर्डिनेंड मैगलन, अ पोर्चुगीज सेलर और एंड हिज क्रूज स्टार्टेड अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम स्पेन. उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की स्पेन से. They kept on sailing toward the west. After a tough journey of 3 years, the ship returned to the place from where they had started.
जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी 3 साल तक वो वेस्ट की तरफ सेलिंग करते रहे एंड देन वो रीच हुए जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. दिस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ ball as you see the picture. Yes, in fact the shape of the earth is like an orange which is slightly flat at the top and bottom. Now everyone understand? Shape of the earth is round. Ferdinand Magellan proved that the earth is round in shape. Now let's learn about the globes and maps. To find and search places on the earth with the help of globes and map. I will explain you. The earth is very big. We can not see the entire earth at the same time. आप पूरा entire earth को एक same time पे नहीं देख सकते because it's large size. वो बहुत बड़ी है size में. So we have to make a model to study it. तो हमने क्या किया? वी हैव मेक अ मॉडल. हमने उनका एक मॉडल बनाया उसकी स्टडी करने के लिए एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड अ ग्लोब. जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब. अ मॉडल ऑफ अर्थ कॉल्ड अ ग्लोब shows us the whole earth. We can rotate it, see different places. The globe is round in shape which shows continent, oceans and all the countries. But however it is not possible to all the places on a small globe. बट ये पॉसिबल भी नहीं था कि स्मॉल से ग्लोब में सारे प्लेसेस आ जाएं एंड ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कैरी. इसे कैरी करना भी डिफ़िकल्ट था. सो ये प्रॉब्लम सॉल्व की बाय यूजिंग मैप्स. यस, मैप्स. व्हेन वी ड्रॉ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. जब भी आप कभी अर्थ को ड्रॉ करते हैं or a part of it on a flat surface पे like paper, it is called map. A map is a drawing of earth on a flat surface. It is available in all the sizes. It can be big or small and easy to carry. And when maps are collected together in a book, जब कभी maps, बहुत सारे maps एक book में collect होते हैं together, different maps, it's called atlas. A book of map is called an atlas. And sometime you have seen the world map, and sometime we use big maps. They are hang on walls. Such maps are called wall maps. You have seen this is the wall maps. Thank you class. For the chapter we will discuss on the next session. Thank you.